Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 13, Energy and its Resources, and today I will deliver its fourth lecture. But let's start the lecture with the recap. So quickly listen to the questions very carefully and then answer them. So here you can see different pictures on your screen. So what are the uses of wood for energy? Very good. What is the purpose of dams? Excellent. And what is the use of wind for energy production? It generates electricity. Very good. Okay, my dear students, let's start with an activity. So here you can see what type of natural sources you use for barbecue. So barbecue करने के लिए आप कौन से natural sources को use करते हैं? कोयला इस्तेमाल करते हैं हम, है ना? Coal is used. Next is, do you know which petroleum product is used for cooking? आपके घर में कौन सी चीज कुकिंग के लिए यूज होती है? Gas, natural gas. So that is a natural source. Okay, what is the use of natural gas at your homes? So it is used for cooking. It is also used in geysers and heaters to keep us warm. So my dear students, this is it. Okay, my dear students, in today's lecture, students will be able to identify natural sources of energy. We will discuss about coal, oil and gas today. So my dear students, let's have a look at the Islamic perspective. And the earth, we have spread it forth and made it firm mountains and caused to grow in it every suitable thing. So my dear students, Allah Ta'ala ने ज़मीन में, पहाड़ों में हमारे लिए बहुत सारी मादनियात जो हैं वो रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए उगाई हैं ताकि हम ज़मीन पर आराम से रह सकें. ये हमारी सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं. So my dear students, some pre-reading questions. Quickly tell me what are uses of coal? घर में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बारबेक्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिक्के सीख कबाब बनते हैं. वेरी गुड. इसके अलावा भी कोल के बहुत सारे यूजेस हैं. वी विल डिस्कस इट. एंड फॉर विच पर्पस वी यूज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम मसनूआत हैं, यानी कि नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये किन कामों के लिए यूज़ होता है? आपकी गाड़ी में तेल डलता है, मोटर बाइक्स में, बसेस में तेल डलता है, जहाज़ों में ऑयल इस्तेमाल होता है. इसके अलावा हमारे घर में नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है. So my dear students, let's quickly start the reading. I request you all to please open page number 123 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So let's start the reading. Coal. What do you burn for barbecue? Yes, coal is another source of heat energy just like wood. The energy obtained from coal is utilized for domestic cooking and heating to produce electricity and steam in industries. So my dear students, आप जब बारबेक्यू करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप कोयले को इस्तेमाल करते हैं. So that means कोल से जो है वो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. और जिस तरह लकड़ी से हम जो है लकड़ी को जला के और खाना बनाते हैं, इसी तरह कोयले को भी जलाकर जो है इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. सो कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एट होम एंड इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो इसकी हीट से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है. नाउ लेट्स रीड अबाउट पेट्रोलियम. Where do vehicles get energy from? It may be petrol, diesel, high octane, etc. All these are petroleum products. These are obtained from crude petroleum, which is found underground. The energy from petroleum products has many functions. For example, moving vehicles, generation of electricity, domestic cooking, etc. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम जो है ये एक और जो है वो नेचुरल सोर्स है और इसको ज़मीन से हासिल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल और फिर इससे पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन जो है वो पैदा की जाती है. इनको जो है वो गाड़ियों में, बसों में इस्तेमाल किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. इसके अलावा पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है जो कि इंडस्ट्रीज़ में और हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है. बट दैट इज़ एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
So this is how crude oil is extracted from the earth, यानी कि जमीन के नीचे से heavy machinery निकाल के पेट्रोलियम को या तेल को जो है वो extract किया जाता है. Now let's study about natural gas, which is another source of energy. Natural gas. Turn on your stove. A gas with a pungent smell is released that burns to cook your food. It also warms water in gas-based geysers. The energy from gas has many purposes, such as domestic cooking, moving vehicles, CNG and LNG, generation of electricity, industrial heating, etc. So my dear students, एक और तरह का सोर्स है गैस. जब आप अपने घर में चूल्हे को ऑन करते हैं तो उसके अंदर से एक गैस रिलीज होती है जिसकी आपको आवाज़ भी आती है और आप उसको स्मेल भी कर सकते हैं. इसको नेचुरल गैस कहा जाता है और ये गैस जो है ये भी ज़मीन से निकलती है. इस गैस को जो है वो व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CNG. इसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और इंडस्ट्रियल बेसिस के इंडस्ट्रियल जगहों में इससे हीटिंग भी की जाती है. इसके अलावा इसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गीजर्स में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं. So now is the time for practice. You can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, fill in the blanks with appropriate words. So here are some blanks given. So you have to fill them up with the appropriate word. We use solar panels to get energy from the sun. Very good. We use hydroelectric power stations to get energy from the water. Excellent. We use wind turbines to get energy from the wind. We use coal, crude oil and natural gas to generate electricity in our homes and in industries. Okay, my dear students, now complete the diagram by writing the words from the word bank. So this is the word bank. So you have to fill this diagram up. So आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. सो नॉन रिन्यूएबल. Is oil renewable or non-renewable? Oil is non-renewable. Why? Because once it is burnt, you cannot generate it again. Sun is renewable because you keep on using it. Coal, once it is used, it cannot be generated again, so it is non-renewable. Wind is again renewable. Gas is non-renewable, and water. As energy point of view, water is also renewable. So this is it. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. I will ask question number 16, 18 and 19. 16, 17, 18 and 19. Describe some uses of coal energy. It is used for heat production and it is also for the used for the production of electricity. What is the source of energy in vehicles? Fuel. Very good. Describe the utilization of energy obtained from petroleum products. It is used as fuel of the cars. It is used to generate electricity. It is used for burning and for heat production. Next is, what purpose natural gas is used? For cooking, for heating, for the production of electricity. And it is also used as a fuel of cars and vehicles. Okay, my dear students, now is the time for homework. For homework, quickly turn to page number 128 and you will do question number 4. And this time you will complete coal and oil. You have already done flowing water and wood. Now you will write down about which form of energy the following sources provide. You will write about coal and oil in your notebook. So this is your homework. And you will also do homework activity number 4 on 123 page. Name the energies that we get from coal, oil and natural gas. We get heat energy and electricity from, and we also get fuel from these natural sources. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. So in today's lecture, we have studied that coal is used to gain heat energy for domestic cooking, production of electricity and steam in industries. Energy from petroleum is used for moving vehicles, domestic cooking and electricity generation.
Natural gas is used to gain energy for moving vehicles, industrial heating and electricity generation. So my dear students, आज हमने और जो है further natural resources के बारे में पढ़ा है जिनसे हम मुख्तलिफ तरीके से एनर्जी को जनरेट करते हैं और उसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.